In the name of Allah, the Merciful and the Beneficent. Dear students, Assalamu alaikum. As you know, we have started poetry section. Today we are going to discuss the next poem, One Art, which is written by Elizabeth Bishop. Actually, she wants to convey the message here that the human life is full of gains and losses. Sometimes we feel glad at some achievement, and sometimes we feel sad at some loss. She tries to teach us the art of mastering our sorrow. She is of the view that though there are some irreparable losses, but the intensity of these can be reduced to a great extent. This is the main theme of this poem. Now we will have the brief introduction of the writer here. She was born in 1911. She was died in 1979. So far as her occupation was concerned, she was a poet. Her life partner was Lotta J. McDougall. She was an American poet and short story writer. She was consultant in poetry to the Library of Congress from 1949 to 1950, the Pulitzer Prize winner for poetry in 1956, and the National Book Award winner in 1970. Dwight Corner argued that she was perhaps the most purely gifted poet of the 20th century. Okay, students, now we will discuss about the text of this poem, and after that we will discuss about the themes of this poem here. So be careful now. One art, ek fun. Here the writer is saying that we must learn the art to master our emotions and feelings. Whenever we lose something, we must control the confusion and the sorrow. The intensity can be reduced and the gravity of sorrow can be reduced. The art of losing isn't hard to master. So many things seem filled with the intent to be lost that the loss is no disaster. राइटर यहाँ पे कह रही है कि खो जाने के फ़न पे महारत हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। बहुत सी चीज़ें बनती ही इसीलिए हैं कि वो खो जाएं, और उनकी गुमशुदगी जो है, उनका गुम हो जाना जो है, वो कोई तबाही नहीं होता। सो द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़न्ट हार्ड टू मास्टर। तो खो जाने का फ़न जो है, इसमें मास्टर कर लेना, खुद को माहिर कर लेना कोई मुश्किल बात नहीं है। Lose something every day. Accept the fluster of lost door keys, the hour badly spent. The art of losing isn't hard to master. तो राइटर यहाँ पे कह रही है कि lose something every day. हर रोज़ कुछ गुम कीजिए। Accept the fluster. Fluster मीन घबराहट। तो घबराहट को बर्दाश्त करें, कंट्रोल करें। Of lost door keys, जब आपकी घर की चाबियाँ गुम हो जाएं, द ओवर बैडली स्पेंट, और वो घंटा जो आपका बुरा गुजरा। द आर्ट ऑफ लूजिंग इज़न्ट हार्ड टू मास्टर। तो खो जाने के फ़न पे महारत हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। वट एवर वी लूज वी मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट दैट वी लूज समथिंग इन आवर लाइफ। ओके, देन प्रैक्टिस लूजिंग फादर लूजिंग फास्टर। तो राइटर कह रही है फिर मज़ीद कुछ गुम करने की और ज़्यादा तेज़ी से गुम करने की मशक करें, प्रैक्टिस करें। प्लेसेस एंड नेम्स एंड वेयर इट वॉज यू मैंट टू ट्रैवल। उन जगहों और उन नामों को, वो जगह जहाँ पे आप गए थे सफ़र करने के लिए। नन ऑफ दिस विल ब्रिंग डिसास्टर मीन्स टू से कि अगर जो है आप उन जगहों को, उनके नामों को, या जहाँ पे आप सफ़र के लिए गए थे आप भूल गए हैं, देन इट्स नॉट अ बिग डील। नन ऑफ दिस विल ब्रिंग डिसास्टर, इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि ज़िंदगी में तबाही ले आएगी। बट यू मस्ट कंसिडर इट एज अ नॉर्मल रूटीन बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। I lost my mother's watch and look my last at next to last of three loved houses went. The art of losing isn't hard to master. ओके, तो अब यहाँ पे राइटर कह रही है कि मुझसे मेरी वालदा की वॉच गुम होगी और देखिए वो मेरा गुज़श्ता या फिर उससे भी गुज़श्ता 3 अजीज़ घरों में से घर चला गया। तो क्या है मतलब ये कि ज़िंदगी में चीज़ें तो होती खोने के लिए हैं। हम बहुत सी चीज़ें जो है वो ज़िंदगी में खो देते हैं। तो बट इट डजंट मीन दैट इट विल ब्रिंग अ डिसास्टर इन लाइफ, कि ये हमारी ज़िंदगी में तूफ़ान ले आएंगी या तबाही, और हमारी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। I lose to cities, lovely ones, and vaster some realms I own to reverse a continent. तो राइटर यहाँ पे कह रही है
कि मैंने वो बहुत खूबसूरत शहर, बहुत ही खूबसूरत शहर जो है वो खो दिए। एंड वास्टर, उससे भी वसीतर क्या था, सम रेल्स आई ओन, वो स्टेट्स, वो ममलकतें जो मेरी थी, टू रिवर्स अ कॉन्टिनेंट, दो दरिया और एक बर आज़म। आई हैव लूज्ड ऑल दिस थिंग्स, आई मिस दैम, मैं इनको याद करती हूँ, बट इट वाजंट अ डिसास्टर, लेकिन ये कोई तबाही नहीं थी। नाउ द राइटर इज ट्राइंग टू say that whenever we do lose anything, it doesn't mean that we don't feel uh, sorrow, we don't feel grief. We will be, you can say, we will be sad at the loss of something or someone, but with the passage of time, the intensity and the gravity of the losing thing can be reduced. I lose two cities, lovely ones, and vaster, some realms. I own to rivers, a continent. I miss them, but it wasn't a disaster. मुझे ये सब याद तो आता है, but it wasn't a disaster. लेकिन ये एक तबाही नहीं थी. Even losing you, the joking wise, a gesture I love, I shan't have lied. It's evident the art of losing isn't too hard to master, though it may look like राइट इट। तो यहाँ पे वो जो है राइटर मज़ाही अंदाज में कह रही है कि वो जिसको मैं लाइक करती हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, मीन्स ये कि वो मेरा जो लवर है, हाँ, उसको भी खो देना जो है वो ज़िंदगी में तबाही नहीं लेके आ सकता। आई शैंट हैव लाइड, तो ज़ाहिर मैंने झूठ जो है वो नहीं बोला होगा। इट्स एविडेंट, क्योंकि ये वाज़े है। द आर्ट ऑफ लूजिंग्स नॉट हार्ड टू मास्टर, क्योंकि खो जाने के फ़न पे महारत हासिल करना कोई मुश्किल बात नहीं है। दो इट मे लुक लाइक डिसास्टर, इवन कि हमें चीज़ों का खो जाना और लोगों का खो जाना जो है वो हमें ऐसे लग रहा हो कि ये हमारे लिए तबाही का बायस बन सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ sorrows and pleasures. So life is a combination of beautiful things and the painful things. So we must have the courage to accept the reality here. Okay, now we will see the next one here. So now we will discuss about the major themes of the poem. Major themes in one art, losing, acceptance, and sadness are the major themes found in the poem, incorporated with powerful language and other literary elements. The poet's message includes losing something or someone doesn't bring disaster. तो यहाँ पे खो जाना, खो देने के फ़न पे महारत हासिल कर देना, चीज़ों को खो देना और फिर एक्सेप्ट कर लेना रियलिटी को, जो चीज़ें आपने खो दी उनको एक्सेप्ट करना, घबराहट पे काबू पा लेना और फिर अपनी सैडनेस पे कंट्रोल कर लेना, ये मेजर थीम्स हैं। तो इसका जो एक्चुअल राइटर जो हमें मैसेज देना चाह रही है वो यही है कि वट एवर वी लूज इन आवर लाइफ, आइदर इट्स समथिंग और समवन दैट विल नॉट ब्रिंग अ डिसास्टर इन लाइफ। तो ये ज़िंदगी में कोई तबाही नहीं लेके आता कि आपने कुछ कोई चीज़ खो दिया या किसी को खो दिया है। और साथ में ही राइटर जो है वो इस फैक्ट पे भी जो है वो रोशनी डाल रही है कि बट इट डजंट मीन दैट वेन एवर वी लूज समथिंग वी डोंट फील सैड। We must be sad at the loss of something or someone, but we can control our feelings because time is the best healer. The sorrow and the painful feelings can be reduced with the passage of time, and we try to accept the reality that life is a combination of sorrows and happiness, and it's also a fact that we have to lose something in our life, and we must practice all these things and we must have the courage to accept the reality. Okay students, now this is your poem, and if you have any problem here you can ask from me. Thank you and stay blessed all of you here.